Welcome to your online class. I hope that you all are doing well. In this video, we are going to start with the new chapter, which is chapter number 6 of the books, and the name of the chapter is fossils. Okay, so what are fossils? Fossils are basically preserved remains of living organisms from the past. So when an animal or plant it dies or it decays, then some of it, if it is reserved by people or if it gets reserved on its own, then if some then the remains of that preserved living organisms is called fossils. Okay, so that's the definition of fossils. So I'm going to read from page number 86 of your book. So for that you should open page number 46 of your book. Um, sorry, 86 of your book. This is page number 86 of your books. I'm reading from here. Fossils can be a former plant or animal that lived long ago. So anything, any plant or animal can be fossil if it's preserved and its remains are found by anybody. So that's a fossil. So it could be an animal or a plant. Fossils are found everywhere and they tell us what was around in the past and what conditions were like then. And they can tell us how long ago an animal or plant lived and what conditions or climate existed then. So these fossils or the remains that are found, they give us some sort of information. So scientists or archaeologists to dig into history, they tend to find whether what these fossils tell us, what the condition what were the conditions when these animals or plants were living in, what kind of climate they might have lived in, what kind of weather they might have lived under, or or all other or several other information about them. Fossils are mostly found in sedimentary rock. When an animal dies, it leaves behind the hard parts and soft parts. Hard parts are teeth and bones in the spinal column and shell. Soft parts, on the other hand, include the organs. Most fossils are found at the hard part. How a fossil is formed is described below. So, when obviously as human beings they have two parts, like there was skeletal part and then there were muscular part which consists of muscles and everything. And when a human being or animal or plant dies, so what not a plant but animal or human being they die, so the flesh or the muscle and the the flesh part, it starts decaying. So with the passage of time it decays and it kind of goes away. But the hard part, the bones or the skeletal part, it remains stagnant. It remains behind. Um, these are the hard and the soft parts. So usually the hard, not usually, almost every time if somebody finds a fossil, they are going to find hard parts, the shell, the skeletons. So you must have heard in the news, or you must have heard it somewhere that remnants or bones which are like 250 years ago were found. So there is no flesh, only bones. So fossils are commonly found in sedimentary rocks. So these are the example of sedimentary rocks. So what are sedimentary rocks? Sedimentary rocks are the types of rock that are formed by the accumulation or deposition of mineral or organic particles at the earth's surface, followed by sedimentation. Sedimentation is the collective name for processes that cause these particles to settle in place. So sedimentary rocks basically are those rocks which are which collect together, which are collected and they are then glued together, which is a amalgamation of different sort of rocks. तो तो बहुत सारे डिफरेंट रॉक्स होते हैं, जब वो एक साथ आके जुड़ जाते हैं और ऊपर उनके सीमेंट की तरह वापस में जुड़ जाते हैं तो वो सेडिमेंट्स बन जाते हैं। मतलब वो जो रॉक्स होते हैं वो दूसरे रॉक्स का पार्ट होते हैं। जो छोटे रॉक्स जो इकट्ठे होके एक रॉक सेडिमेंट बनाता है, वो किसी रॉक का टूटा हुआ कोई पार्ट होगा, which can be of which can happen due to weather or other conditions. So these are sedimentary rocks.
How a fossil is formed is described below. So, how a fossil is formed, let's look at this picture, which is on page number 86 six of your book. This is a fish, which is, is found on a sedimentary rock. Fossils are formed when an animal dies and settles in water or soil. So, how is a fossil formed? It, it is formed when an animal or a plant dies and settles in water or soil. So, obviously, it will either settle in water or soil. Sediments settle over it. So, what happens is when जब वो चीज़ मरती है, when it dies, so then the stone, they take it, they overtake it, and they take over it, and they settle over it, and sediments they settle over it. The animal's hard parts are embedded in the sedimentary rock and preserved. Okay, so the animal's hard part then is embedded in the sedimentary rock and preserved. तो वो जो उनका हार्ड पार्ट होता है दैट वो उसके साथ जो जब वो सेडिमेंट्स बनता है सेडिमेंट्री रॉक बनता है तो वो उसके साथ भी वो भी उसमें इंडल्ज हो जाते हैं मर्ज हो जाते हैं इमर्स हो जाते हैं तो आफ्टर लॉन्ग पीरियड इज फॉर्म अ फॉलिक तो बहुत टाइम गुजर जाता है आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ फॉसिल so question number 87 what fossils tell us so what does fossil tell us fossils tell us how a particular animal or plant evolved or didn't evolve so well, first of all, the thing that we learned is what are fossils. Okay, so fossils are the remnants or the remains of animals or plants that lived, years ago. And what fossils tell us? What do they convey? Fossils they tell us that how a human, or a plant or animal might have lived in the previous times, or in what kind of climate, in what kind of conditions they might have lived, or how the plant and animal was at that point of time. So the scientists, the archaeologists, the people who study or dig into it, they kind of make a guess. Paleontologists are scientists who study fossils. So basically, not archaeologists. Archaeologists, sorry, paleontologists. Paleontologists are those people who study fossils, not archaeologists. Archaeologists they also study history, but basically, paleontologists are those people who study fossils. They can tell much about an animal at a time period just by studying fossils. So this is their job. So when they find their fossil, they find the remnant plants and animals. They just study it deeply and they go through it and they dig into it and they um, learn about it and they can just tell that time period in which that plant or animal might have lived. Many animals like modern elephant have changed over time. So paleontologists they believe that this animal like woolly mammoth, they were in the previous time they used to be like this. They have changed over, they evolved over time. Many paleontologists believe that the modern elephant believed from the woolly mammoth which existed during the Ice Age. So during the Ice Age, this is the belief of the paleontologists that this elephant, the elephant that we see today, it was different from the elephant that was in the Ice Age time, Ice Age era. So it was usually like a woolly mouth. So at that point of time. Elephants are quite similar to the woolly mammoth except that they do not have the extremely long tusks that woolly mammoth had. Okay, you can see the picture of these tusks or जिनको हम लोग उर्दू में सींग कहते हैं. So these tusks you can see the picture of that and that woolly mammoth. Fish are also animals that have evolved quite a bit. You can see the picture of a fish. So and paleontologists that believe that ये जो animals and plants हैं ये वक्त के साथ साथ जो है ना ये बदले हैं जैसे एवोल्यूशन की थ्योरी है कि मतलब इंसान जो है बंदर से इंसान बना है तो मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंसान जो है वो बदला है इसी तरह ये एनिमल्स जो है ये भी पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे ये भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं यानी चेंज हुए हैं नए उनके अंदर कुछ चेंजिंग्स आई हैं तो इसी तरह जैसे एलिफेंट पहले बोली में मौत जैसा होता था जिसके बड़े बड़े सींग थे टस्क थे अब जो है जैसे फिश है fish are also animals that have evolved quite a bit fossils found in various parts of the world show that the first fish had no jaws तो जैसे ये फिश के जॉ होते हैं ना जैसे जो माउथ वाला एरिया होता है तो ये पिछले जमाने पहले टाइम्स में पेलेंटोलॉजिस्ट को ऐसे और जो फॉसिल में उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि
पुराने टाइम में जो फिश थी उसके जॉज नहीं हुआ करते थे. So, a living fossil is an animal or plant that hasn't evolved uh, mm, since its predecessors. Um, so living fossil यानी कि जो फॉसिल्स जो होते हैं ना, जो जिनके मिलते हैं उससे हमें ये अंदाजा आ जाता है कि चीजें कैसे बदली हैं. तो जो लिविंग फॉसिल्स होते हैं वो कौन से एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं, वो कौन से फॉसिल्स होते हैं जो ज्यादा अपने जो पुराने उनके जो आबाई जिसको कहते हैं, या पुराने जो उनकी नस्ल में जैसे लोग या जो नस्ल में जैसे जानवर या प्लांट्स रहे हैं वो भी वैसे ही हैं. मतलब इवॉल्व नहीं, चेंज नहीं हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम. दे डिड नॉट इवॉल्व, दे डिड नॉट चेंज इनटू समथिंग एल्स. Like they did not grow into different species. So these are the living fossils. ठीक है. um, a coelacanth is an example of a living fossil. ये आप लोग इसको आपकी नजर आ रही है फिश है जिसको coelacanth. So it's coelacanth. Okay, coelacanth. So ये living fossil की एक एग्जांपल है. It was thought to be extinct um, until discovered in 1983, 1938. Extinct का मतलब होता है जो चीज़ कोई ऐसी जानवर या इंसान या जो चीज़ मतलब एक टाइम था तब एग्जिस्ट करी थी लेकिन उसके बाद वो नहीं एग्जिस्ट करी थी, उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गई, नहीं गायब हो गई. तो it was believed that this coelacanth was also it became extinct, but in then it was again discovered in 1938. तो ये still इसकी जो presence है अभी ये living fossil में आता है जो अभी तक it hasn't changed much since its predecessors making it a living fossil. तो ये अपनी जब जैसे पहले इसके पेरेंट्स रहे होंगे, उनके फोर पेरेंट्स, फोर फादर्स या फोर जो होते हैं वो रहे होंगे, इसी तरह से दे आर ऑल्सो लिविंग फॉसिल. एंड वो भी वैसे ही थे जैसे इनके बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे इनके पेरेंट्स थे. Okay, page number 88. Fossils can tell us what things happened many million years ago. Millions of years ago. If scientists wants to study how a particular land was millions of years ago, they just need to study the rocks and fossils that were extracted from the area. So, अगर साइंटिस्ट ने ये देखना है कि मतलब ये जो जमीन है ये उस टाइम पर कैसी हुई होगी, मतलब किस तरह की इसमें रॉक्स और फॉसिल्स होंगे, तो उन्हें किस तरह की मतलब किस टाइप की ज़मीन होगी, किस तरह की चीज़ें यहाँ एग्जिस्ट कर सकती होंगी कंडीशंस को स्टडी करने के लिए. तो वो क्या करते थे कि वो क्या करेंगे, सिंपल साइंटिस्ट को क्या करना है कि वो जो है वो सिंपल वहाँ के जो रॉक्स और वहाँ के फॉसिल्स हैं उनको निकाल के उनको स्टडी करेंगे, जिससे उनको दे विल गेट एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ land that might have been. Basically, rocks form layers over time. तो जो क्योंकि हवाएं चलती हैं, मतलब समंदर में भी जैसे हवाएं चलती हैं, तो हवा के साथ साथ चीज़ें चीज़ें जो होती हैं वो एक दूसरे ट्रेवल करती हैं. कुछ जैसे मिट्टी होती है ट्रेवल करके दूसरी जगह चली जाती है. इसी तरह जब हवाएं वगैरह चलती होंगी, कोई और आंधी तूफान टोर्नेडोज और इस तरह की जो these weather conditions when they change और when snowfall होती है, तो इससे भी चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं. तो टाइम के साथ साथ व्हाट हैपेंस इसके रॉक्स जो होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उनके ऊपर लेयर्स आ जाती हैं. It is by studying the layers that a scientist can determine what kind of animal lived there and climate the place had. As a scientist digs, the older rocks will be in the deeper layers. Over time, rock layers form on the earth's crust as more sediments settle. ठीक है, तो क्या है एज अ साइंटिस्ट, तो जब साइंटिस्ट जो होता है वो उनकी लेयर्स को स्टडी करता है तो उनको पता चल जाता है कि वहाँ पे उनको फसल के जो उनको रिकॉर्ड्स अगर मिले तो वहाँ से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना उस टाइम पे पुराने वक्तों में चीज़ें कैसी रही होंगी. This is how scientists were able to determine where the oceans were and how the continents were and connected were all connected millions of years ago. ठीक है? The Great Canyon is an example of how the Earth can change over time. ठीक है? तो this is how scientists were able to determine where the oceans were. यानी इससे उनको पता चला कि जब साइंटिस्ट जो होते हैं फॉसिल्स और रॉक्स को स्टडी करते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि ओशंस जो होते हैं वो
ओशंस कैसे होते हैं, और ओशंस कैसे होते हैं। और द ग्रैंड कैनियन इज एन एग्जाम्पल। ये एक रिवर है, ये, जिसकी ग्रैंड कैनियन जो है, इसके बारे में आप लोग ज़रा स्टडी करना ही, आप लोगों की एक मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको टास्क दे रही हूँ कि ग्रैंड कैनियन जो है वो कैसे जो है ना वो द पीरियड ऑफ टाइम में चेंज कैसे हुआ है। नहीं नहीं, और ये कॉन्टिनेंट्स जो थे पुराने वक्तों में कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने ये जो ग्रैंड कैनियन है इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करनी है, और यू हैव टू फाइंड आउट how the earth has changed over time, or what is the importance of this grand canyon, what is this place, where it is, and how it has evolved over the period of time. So this is your task, you have to do it at your homes and just research करें। और अगर आप इस इफ़ यू वांट टू, मतलब उसका आपको पता होना चाहिए, शुड नो अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू राइट इट डाउन, अगर आपने लिखना भी चाहते हो तो यू शुड राइट इट डाउन। अगर आप लोग नहीं लिखना चाहते तो देन इट्स अप टू यू, बट यू शुड नो। एंड रफ कॉपी में आप लिख लो, डू नॉट राइट इट इन नीट कॉपी बट राइट इट डाउन इन द रफ कॉपी। तो आपको जब क्लास में होता है, यू शुड नो दैट, जब हम दोबारा से अगर इफ वी वेंट थ्रू दिस चैप्टर अगेन, तो आप लोगों को पता हो कि ग्रैंड कैनियन क्या है। So this is all for today, and I'm going to see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.